Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture, Electrical Machine. So, in previous lectures, we have studied about the open circuit, short circuit test, and then also we compute some numerical problem in order to find the equivalent model of a transformer. And then we also discuss about the phasor diagram of a transformer using under three different conditions. So one was the phasor diagram under the lagging power factor. The second was when the power factor was unity, and under third condition we have consider if the power factor is leading, and then we see the voltage regulation, that the voltage regulation will be negative in case of leading power factor, and it will be positive in case of lagging power factor and unity power factor. So now today let have a short discussion regarding the efficiency of a transformer. So it is very important to note that the efficiency of a transformer is high as compared to other electrical machines, because in a transformer there are no rotating parts. So due to no rotating parts, there are no mechanical losses. So that is why the efficiency of a transformer is high. So this is the efficiency of any system, that efficiency is equal to output divided by input power. So output power and input power is equal to output power plus losses. So what is input power and what is output power? So we know that output power is V is cos theta, and there are two types of losses. One is the copper loss and the other is core losses. Because the copper losses arises due to the copper winding, due to the internal resistance of copper winding, and the core losses arises due to hysteresis and eddy current losses. So here the leakage flux losses are considered to be negligible. Okay, so this was all about efficiency of a transformer. So now let's move toward an example. In this example, actually, we are given data open circuit and short circuit test, and we have asked uh, to find out the voltage regulation of a transformer at different power factors, and we are also asked about to find the losses of a transformer. Okay, meaning the efficiency of a transformer at different power factors. Okay. So the statement of the example is a 15 kVA to 23 kilo 2.3 kilo to 30 volt transformer is to be used, is to be tested to determine its excitation branch components, its series impedances, and its voltage regulation. The following test data have been taken from the primary side of the transformer. So this is the data that is obtained during the open circuit and the short circuit test of a transformer. The transformer is actually a step down transformer, because here the input voltage is 2300 and the output voltage is 230. So it means this transformer is actually a step down transformer. So the open circuit test is performed at the low voltage side. It means the open circuit test is performed under uh, this condition. Okay, and the short circuit test is performed under this condition. Okay. So now what we have to find, we have to find the equivalent circuit of this transformer referred to the high voltage side. We have to find the equivalent circuit referred to high voltage side. Also we have to find equivalent circuit referred to low voltage side. Also, sorry, we have to find the full load voltage regulation at zero point 0.8 lagging power factor, unity power factor, and zero point 0.8 leading power factor. So we have to compute the voltage regulation. Also, we have to plot the voltage regulation
as load is increased from no load to full load at form factor of 0.8 lagging, 1 in 0.8 leading. Okay. In the first condition, what is the efficiency of the transformer at full load with a form factor of 0.8 lagging? Now in part E we have to compute about the efficiency. So we know that efficiency is equal to output power divided by input power. So now let's move toward the solution. So first of all, we have to find the equivalent circuit of a transformer. So this is the data, open circuit test. So we obtain the power factor, and then we obtain the admittance, and from admittance actually this is IOC divided by V open circuit. So I open circuit, V open circuit, and we will compute the power factor. Just calculate this and you find that it is 105 kilo ohm and 11 kilo ohm. Okay. Now from the short circuit test data, the short circuit impedance single is we find this. Okay. Now यहाँ पे the question is in first case we have to find the equivalent circuit of a transformer referred to the uh, low voltage side. Okay. So now we have to find the equivalent circuit of a transformer referred to the high voltage side, because the primary is the high voltage side. Okay. So by multiplying the square of turn ratio or turn ratio with the voltage and with the impedances, and dividing the turn ratio with the current, we obtain actually this diagram. So this diagram is also obtained in the previous examples. ठीक है, जो एग्जाम्पल इससे पहले हमने की है तो ये जो पार्ट है एग्जैक्टली उसी तरह से है. ठीक है, you just need to put these values and you have to calculate. Now in second part we have to, यहाँ पे देखें कि हमने जो कंप्यूटेशंस किए, ठीक है, तो एक लो वोल्टेज साइड पे था, एक हाई वोल्टेज साइड पे था. तो अगर रेफर टू हाई वोल्टेज हमने फाइंड करना है तो लो वोल्टेज साइड का जो कैलकुलेशंस थी उसको हमने टर्न रेशोस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको सेकेंडरी साइड पे लेके जाना है. ठीक है, और दूसरे स्टेप में सेकेंडरी साइड पे जो कंप्यूटेशंस आपके पास, जो भी वैल्यूज आपके पास आई है, तो उसको आप लोगों ने प्राइमरी साइड पे रिफ्लेक्ट करना है. सो ये दो पार्ट्स जो है ये तो बिल्कुल सेम है इससे पहले जो हमने की है. अब यहाँ पे आप ये देखिए कि हमने नया पार्ट जो है वो ये है. ठीक है, दिस इज द न्यू पार्ट. तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करना है और उसका फेजर डायग्राम जो है वो प्लॉट करना है. तो वोल्टेज रेगुलेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि Vp by alpha is equal to Vs plus R equivalent Is plus Jx equivalent Is. This is Vp by alpha. This is the expression for the voltage regulation. Vp by alpha minus voltage of secondary at no load divided by voltage of secondary at no load. Sorry. So this Vp by alpha can be computed as Vs plus R equivalent Is plus Jx equivalent Is. So we have find the value of R equivalent, that is 0.0445 ohm, X equivalent, that is this. Okay. So now putting these value also we have find the value of Vs. Okay. The value of Vs is actually 230 volts. It is given, and the Is value can be computed by S divided by Vs. So S is 15 kVA. It is given, divided by 230 volts. So V is 65.2 ampere. Now we have to find at power factor 0.8 lagging. So whenever there is when the power factor is lagging, so it's mean that the angle is negative. So just put in 230, this, put in these values and compute this. So we get Vp by alpha is equal to 234.85 with angle 0.40. Okay, so this is the full load.
This is the no load. Actually, this is the no load voltage, and the full load voltage is 230 volts. It is given. So just compute the difference, and you will get that the voltage regulations comes out to be 2.1%. And also we have observed in the previous lecture that the voltage regulation will comes out to be positive in case of lagging power factor. So this is lagging power factor and the computed voltage regulation is positive. Also, you can observe this phenomena from this diagram because the length of this vector is less and the length of this vector is more. So when you compute the difference of a large quantity, okay, so you will find the result is positive. Now let's move toward another part of this numerical problem. So now when the power factor is unity, so at unity power factor, just only the angle will become 0. Put this angle 0 and compute the same calculation, okay? So now when you compute the calculation, so it comes out 232.94 and the full load was 230. So now you have to compute this difference and it comes out to be 1.28, okay? So I have told you people that in case of unity power factor, the voltage regulation will be positive. Now in case of leading power factor, this angle from negative it becomes positive. In case of lagging power factor, this angle was negative. Now in case of leading power factor, this angle will become positive. Now with this IS, just do these computations and you will find that this voltage is 229.85. So just compute the difference and you will find that the voltage regulation is negative. So I have told you people that in case of leading power factor, the voltage regulation may be negative due to this reason. Actually, you can also observe this phenomena here. This is the length of this vector and this vector. Okay. So in leading power factor, keep in mind that it is possible only in leading power factor that the voltage regulation may be negative. Okay. Now we have to compute the efficiency. So the copper losses are, so in order to compute the efficiency, we have to compute the losses. So to find the efficiency of a transformer, first calculate its losses. The copper losses are, copper loss is actually I square R losses. So it comes out to be 189 watt, and the core losses can compute Vp by alpha square Rc. So this was Vp alpha. Now we have given that the power factor, we have to compute the efficiency of the transformer at the lagging power factor. Okay, so at lagging power factor, this Vp by alpha comes out to be 234.85. So that is why we are using 234.85 because we are being asked in the question that we have to compute the core losses. We have to compute the efficiency of the transformer at 0.8 lagging power factor. So in previous sections of this example at 0.8 lagging power factor, this Vp by alpha comes out to 34.85. So we have compute these two losses, and we also compute V size cos theta, that is 12,000 watt. Just put these values and you find that the efficiency of the transformer is 98%. So 98% efficiency is very high, and the reason behind this highest efficiency is that is there are no rotating parts in this machine. So that is why the mechanical losses is 0, and due to this the efficiency of a transformer is maximum. Now let's discuss another important topic, that is the auto transformer. So I will give you a little bit concept regarding auto transformer. तो देखिए सिंपल सी बात है कि लेट्स सपोज आप लोग जो है अगर 240 वोल्ट्स को लेट्स सपोज डबल करना चाहते हैं, स्टेप अप करना चाहते हैं, तो 1:2 का ट्रांसफार्मर आप यूज़ करते हैं, ठीक है।
या अगर आप लोग जो है मतलब 11,000 वोल्ट्स को अगर आप 240 वोल्ट्स में स्टेप डाउन करना चाहते हैं तो ऐसे ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल है मार्केट में। कीप इन माइंड कि जब आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो कि उस रिक्वायरमेंट के ट्रांसफार्मर जो है वो बाज़ार में मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो फिर उसके दो सोल्यूशन है कि आप अपना ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करें या आप एक ऑटो ट्रांसफार्मर परचेज करें। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? इन सम ओकेशन इट इज़ डिज़ायरेबल टू चेंज वोल्टेज लेवल्स बाय ओनली अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू इंक्रीज द वोल्टेज फ्रॉम 110 टू 120 वोल्ट्स, ठीक है। क्या आपने स्टेप अप करना है 110 वोल्ट से 120 वोल्ट तक। तो यहाँ पे ये मुझे बताए कि इस तरह का कोई ट्रांसफार्मर मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होगा, और अगर आप खुद डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी टिडियस टास्क। सो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में इट इज़ वेस्टफुल एंड एक्सेसिवली एक्सपेंसिव टू वायर अ ट्रांसफार्मर विद टू फुल वाइंडिंग ईच रेटेड एट अबाउट द सेम वोल्टेज, ठीक है। सो इस लिहाज से आप जो है स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर पे यूज़ करते हैं जिसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर जो है, दिस इज योर ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। This is your auto transformer. It has a single winding, and you are giving input at this side, and this is variable knob, ठीक है। तो स्टेप को आप जो है वेरी करके आउटपुट आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपल सी बात है, केवीएल और केसीएल उन्होंने अप्लाई किया हुआ और ये इक्वेशंस जो है उन्होंने डिराइव की हुई है। सो ये टेप जो है ये चेंजेबल है, इसको आप चेंज कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग, ये जो आपके पास जितनी भी कंप्यूटेशंस आई है ये केवीएल और केसीएल को अप्लाई करते हुए आप लोगों के पास आई है। जिस तरह यहाँ पे देखें वीच इज इक्वल टू वी सी, ओके, प्लस वी एस टी। सो इस लूप पे आप केवीएल अप्लाई करें। सो देखिए जिस तरह ट्रांसफार्मर के केस में आप लोगों ने कुछ रिलेशंस आप लोगों ने निकाले थे कि इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज का टर्न रेशो के साथ क्या रिलेशन था। फिर आप लोगों ने ये देखा था कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट का यानी प्राइमरी और सेकेंडरी करंट का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या रिलेशन था, वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर वो रिलेशंस आप देखना चाहते हैं ना तो यू कैन जस्ट टू apply the KVL and KCL. So now let's suppose हम जो है वोल्टेज का और टर्न रेशो का जो है वो रिलेशन देखना चाहते हैं तो कैसे हम देखेंगे। यहाँ पे आप लोग KVL अप्लाई करें। सो यहाँ पे देखें दिस इज वोल्टेज राइज Vh इज इक्वल टू दिस इज VC, दिस इज VC, ओके। नाउ VC by VC is equal to what? NC by NC। यहाँ पे ये जो VC है और यहाँ पे जो VST है, ठीक है, ये किसके बराबर है? इसका रेशो किसके बराबर है? NC by NC, ठीक है। इसका रेशो क्यों बराबर है? क्योंकि जब आपके पास NC यानी नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज्यादा होंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? VC भी ज्यादा होगा, तो लेकिन इसका रेशो जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने ये जो पुटिंग की इस पे कर लिया तो Vh इज इक्वल टू VC प्लस NC VC, ठीक है। V और VC बराबर है। यहाँ पे आप देखें कि दिस इज द लोड वोल्टेज जहाँ पे आप लोगों ने लोड कनेक्ट किया है, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, ये दोनों पैरेलल में है तो ये क्या है? बराबर है। आप लोग उसमें ये पुट कर लें और इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। सो यू विल गेट VL डिवाइडेड बाय VH इज इक्वल टू NC डिवाइड बाय NC प्लस NC। इसी तरह करंट जो है वो भी आप देख सकते हैं कि IL, दिस इज IL, दिस इज इक्वल टू व्हाट? IC, ये जो करंट है, प्लस IS, ये जो करंट है, ठीक है। सो इसको भी आप कंप्यूट कर सकते हैं। इसको ऐसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस आ गए जिसमें से
आप लोगों ने बहुत ही कम वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन की स्टेप अप स्टेप डाउन की ज़रूरत हो, जिस तरह मैंने भी आप लोगों को बताया कि 110 वोल्ट्स को अगर आप 120 वोल्ट्स में स्टेप अप करना चाहते हैं या स्टेप डाउन करना चाहते हैं, तो उन सर्कमस्टांसिस के लिए आपके पास जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। सो मेरे ख्याल में ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नाउ लेट डिस्कस अबाउट थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। सो दिस इज थ्री फेज ट्रांसफार्मर। सो थ्री फेज ट्रांसफार्मर, यहाँ पे आप देखें कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर कुछ भी नहीं है, सिंपली तीन टर्म्स है। ये प्राइमरी है, एक दो तीन, ये सेकेंडरी है, 1 2 3। ये आपने वाइंडिंग कर ली, ठीक है, ट्रांसफार्मर के ऊपर आपने वाइंडिंग कर ली, 3 प्राइमरी वाइंडिंग्स कर ली, 3 सेकेंडरी वाइंडिंग्स कर ली। अब इन प्राइमरी वाइंडिंग्स को आप कैसे जोड़ रहे हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग्स को आप आपस में कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनकी कनेक्शन जो है वाई वाई भी पॉसिबल है, वाई डेल्टा भी पॉसिबल है, डेल्टा वाई भी पॉसिबल है, डेल्टा डेल्टा भी पॉसिबल है। यानी प्राइमरी को अगर आप वाई कनेक्ट करें, सेकेंडरी को भी आप वाई कनेक्ट करें, प्राइमरी को वाई कनेक्ट करें, सेकेंडरी को डेल्टा कनेक्ट करें, प्राइमरी को डेल्टा कनेक्ट करें, सेकेंडरी को वाई कनेक्ट करें, प्राइमरी को डेल्टा कनेक्ट करें, सेकेंडरी को भी डेल्टा कनेक्ट करें। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी की जो डेल्टा कनेक्शन है वो कैसे है, वो मैं आप लोगों को बोर्ड पे समझा देता हूँ। बाकी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जो भी कंप्यूटेशंस है वही कंप्यूटेशंस आपके पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर की भी होंगे। लेकिन जिस तरह सर्किट एनालिसिस 2 के कोर्स में आप लोगों ने देखा था कि उसमें स्टार और डेल्टा √3 का जो मल्टीप्लिकेशन का जो फैक्टर आ जाता था, वही चीज़ें यहाँ पे भी होगी, ठीक है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। So now let's move toward that how we can connect Y Y, Y delta, delta Y and delta delta connections. So just give me 2 minutes. So let's suppose मैंने आप लोगों को बताया कि ये तीन प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है। This is NP1, this is NP2, this is NP3, this is NS1, this is NS2, this is NS3, ठीक है। अब इनको कनेक्ट करना है, तो अब यहाँ पे देखिए एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि इन सब के एक पॉइंट को कॉमन किया जाए। लेट्स सपोज दिस इज NP1, यानी इन पॉइंट्स को जो है ना सबको यहाँ पे कर दिया जाए, ठीक है। और तो ये क्या होगा, दिस दिस दिस, दिस इज न्यूट्रल। सो अगर प्राइमरी को आप इस तरह कनेक्ट करते हैं तो दिस विल बी वाई कनेक्शन। अब इसको कनेक्ट करने का एक दूसरा तरीका ये है कि बजाय इसके कि इन तीन टर्मिनल्स को एक पॉइंट पे कनेक्ट करने का, आप क्या करें, दिस इज NP1, इसको कनेक्ट करें NP2 के साथ, इसको कनेक्ट करें NP3 के साथ, 1 2 3। यानी NP1 के एक एंड के साथ NP2 कनेक्ट करें, NP2 को इस तरह अगर आप लगाएं तो ये डेल्टा कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो अगर आप प्राइमरी को डेल्टा कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी को भी डेल्टा कनेक्ट करते हैं, तो ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो गया, ठीक है। और अगर आप प्राइमरी को वाई कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी को डेल्टा, तो वाई डेल्टा, इसी तरह डेल्टा वाई एंड वाई वाई, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द कैंपस वेरी सून, बिकॉज मेरे ख्याल में ये जो लेक्चर है
सो दिस विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑनलाइन, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह ऑन कैंपस में हम लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करते रहेंगे, एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। सो ओके, इंशाल्लाह सी यू सून। थैंक यू।